অসম আৰু পশ্চিম বংগত হিন্দুৱে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 20 বছৰত বাংলাদেশী মুছলমানৰ কবললৈ যাব পূব ভাৰত, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশংকা। आज पश्चिम बंगाल एंड असम ये दोनों स्टेट हिंदूज आर गोइंग टू लूज ईच मेजॉरिटी विद इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। पहले असम गिरेगा, फिर बंगाल गिरेगा, और असम एंड पश्चिम बंगाल से फिर ये स्प्लिट होते हैं टुवर्ड्स झारखंड एंड बिहार। পশ্চিম বংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমত নিৰ্বাচন সামৰি পশ্চিম বংগত ব্যস্ত হৈ পৰা বিজেপিৰ তাৰকা প্ৰচাৰকজনে শনিবাৰে কলকাতাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। পশ্চিম বংগ তথা পূব ভাৰতত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰসংগত সৰব হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। आपका इलाका में आज से 20 साल पहले कितना मुसलमान लोग थे, और आपका हर इलाका में आज कितना संख्या बढ़ा है। लोगों को कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। पश्चिम बांग्ला से जो बांग्लादेशी घुसते थे, ओनली पश्चिम बांग्ला में ये लोग नहीं रुकते हैं, असम का तरफ जाते हैं, बिहार झारखंड का तरफ जाते हैं। पूरा देश पश्चिम बांग्ला का वोट दाताओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बसाने के लिए, हमारा डेमोग्राफी को बसाने के लिए মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিম বংগৰ কিছুমান অঞ্চলে ক্ষুদ্ৰ বাংলাদেশৰ ৰূপ লোৱা বুলি দাবী কৰে। पश्चिम बंगाल में आजा मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का एक्सटेंशन जैसा लगते हैं। পশ্চিম বংগৰ দিশেৰে প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশীয়ে অসম সহ দেশৰ অন্য ৰাজ্যলৈ গমন কৰি সেইবোৰ অঞ্চলতো জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামো প্ৰভাৱিত কৰা বুলি দাবী কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া পশ্চিম বংগৰ জিলাসমূহত ব্যাপক হাৰত ভোটাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ দিশটো সংবাদমেলত আঙুলিয়াই দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। यहाँ उत्तर दिनाजपुर एक जिले है, वहाँ में जो रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है ये है 105%। दीज आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। मालदा का इंक्रीज है रजिस्टर्ड वोटर का 94.58%। जो यहाँ में वोट इंक्रीज हुआ है, जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, इफ यू एक्सक्लूड बीरभूम, सारे जिला ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर में पड़ते हैं, और काफ़ी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और साथ साथ में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी हो रहा है। এই জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনক মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে কোনো প্ৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি পশ্চিম বংগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰলৈ মাটি হস্তান্তৰ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পশ্চিম বংগৰ 465 কিলোমিটাৰ সীমান্ত এলেকাৰ মাত্ৰ 77 কিলোমিটাৰত সীমান্ত বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মমতা চৰকাৰে মাটি দিয়া বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। সীমান্ত বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক মাটি নিদিয়াটো দেশদ্ৰোহ সদৃশ কাম বুলি অভিহিত কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप हर इश्यू में फाइट करो, लेकिन जब देश का मुद्दा आते हैं तब आपको इसमें फाइट करने का मेरा लगता है ये जो आपने काम किया, ये आपने देश के लिए गुनाह किया। पश्चिम बंगाल में जो 456 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग जो भारत सरकार ने असेसमेंट करके निकाला है कि यहाँ में बॉर्डर फेंसिंग अभी हो चुका है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट अभी तक ओनली 77 किलोमीटर का लैंड ही भारत सरकार को हैंड ओवर किया है। उन्होंने एक प्रकार से देशद्रोह का काम किया। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে অনুষ্ঠিত কৰা এই সংবাদমেলত বাংলাদেশ পশ্চিম বংগ সীমান্তৰে নকল টকা, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আদিৰ অবৈধ বেপাৰ চলাৰ অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। सबसे ज्यादा गो तस्करी जब पश्चिम बंगाल में से ही
स्मगल होते हैं, नेक्रोटिक्स, अदर काउंटरबैंड, ये सारे अभी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर से ही चलते आ रहा है, काफी सीज होते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये सेफ रोड बना लिया है एक गो तस्करी का, एक ड्रग्स का और तमाम काउंटरबैंड जैसा नोटों का साथ ये उन्होंने एक सेफ कॉरिडोर बना चुका है। অসমত 100 আৰু পশ্চিমবংগত 200খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনত বাধা আৰোপ কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে। पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। और मेरा मानना है, ये मेरा खुद का, मैं हर सभा में बोल रहा हूँ, इस बार असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সমান্তৰালকৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মমতা চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা উদঙাই দি পশ্চিমবংগ দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে পূৰ্ণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত বিজেপিয়ে ভোটাৰৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিছে দলটোৰ নেতাসকলে। দ্বিতীয় পৰ্যায়তো ভোটাৰৰ সঁহাৰি লাভ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিয়ে। জনতাৰ ৰায় কাৰ পক্ষত যায় সেয়া স্পষ্ট হ'ব 4 মে'ত। News Desk Report, Assam Talks.